Good morning, student. Today we will do the question answer of lesson 4, long answer type question. In previous classes, we do the all objectives and short answer type 1, short answer 2, and now today long answer type question. First question है यहाँ, describe the construction of a laboratory thermometer. Give 2 precautions to be taken while reading a laboratory thermometer. So laboratory thermometer consists of a bulb with a long capillary tube. The wall of the bulb is made thinner and the capillary tube is made narrow in order to make the thermometer more sensitive. It can be used to measure both hot and cold substances. The range of this thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. 2 precautions to be taken while reading a laboratory thermometer. First, it should be kept upright. Second, the bulb should not touch the surface of the container, but it should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन. उसमें पहला है कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. तो कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. प्रेशर कुकर इज प्रोवाइडेड विथ bakelite handle. Pressure cooker is provided with bakelite handle because it is bad conductor of heat and we can hold it easily even when the cooker is very hot. Third है, air conditioned building have double walled window. The air conditioned building have double walled windows to control temperature and provide a stable and comfortable environment because the space between the two walls trap air which is bad conductor of heat. False ceiling keeps the room warm during winter. False ceiling keeps the room warm during winter because it is made up of plaster of Paris and provided a layer of air between the two ceiling which is bad conductor of heat and prevents transmission of heat from either sides. Next question है, asbestos sheets are preferred over iron sheets for roofing. Asbestos sheets are preferred over iron sheets for roofing because asbestos is an insulator, so keeps the room warm during winter and cool during summer. Next question है, draw a level diagram of thermoflask. Answer the following. First question है, why is the air removed from space between the two walls of glass bottle? Glass bottle. Second question है, why is the glass bottle held in a place inside the metal case with the help of cork pieces? तो इसमें क्वेश्चन, इसका जो डायग्राम है वो फिगर 4.24 बनेगा और आंसर, एयर इज रिमूव फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ ग्लास बोतल टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. नेक्स्ट बी का आंसर होगा, ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो द हीट डजंट ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड द cooker and the cork is a bad conductor too, so again the heat doesn't transfer in the outside of the bottle, transfer in or out of the bottle. अब हॉट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर. तो इसका, द क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बिकॉज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द क्लिनिकल thermometer is very small. Thus if we use it to measure high temperature it may get damaged. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हैज ए वाइट शर्ट and a black shirt, which shirt will make him more comfortable in
ए में है विंटर, बी में है समर। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आंसर ए का होगा ब्लैक शर्ट बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड कीप हिम वार्म। और बी में होगा वाइट शर्ट बिकॉज वाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप हिम कूल। इसके बाद है why is water not used instead of mercury in thermometers when it is easily available to us। तो water cannot measure below 0 degree and above 100 degree Celsius। Mercury is a liquid form and has high coefficient of expansion. It does not sticking to capillary wall of thermometer can easily measure temperature accurately। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर फाइटिंग सूट्स आर ऑलवेज ब्राइट एंड शाइनी वाई। द फायर फाइटिंग सूट्स आर ऑलवेज ब्राइट एंड शाइनी बिकॉज द ब्राइट एंड शाइनी surface are not absorb heat, it deflects the heat and protects from heat। इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि इन रेफ्रिजरेटर वाई आर द फ्रीजर्स ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप। द फ्रीजर आर ऑलवेज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर ड्यू टू नेचर ऑफ कन्वेक्शन। वार्म एयर अराइजेज वाइल कोल्ड एयर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू मड हाउस विथ थैच्ड roof keep cool in summer and warm in winter। तो because thatched roof contain a large amount of trapped air which is bad conductor of heat, so heat from outside does not flow and remain cool। ये हो गया लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर। अब जो है नेक्स्ट डे हम लोग लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर करेंगे।